because today is Friday and my mummy does puja. Friday puja one. So what is Santoshima? Yeah, and the second thing is today is Purnima, I think. So my mom will have another puja today. She will have Satnarayana Swami Vrat Katha. Good morning. It was hello Akhilesh. It was obvious. Akhilesh, you're not attending the afternoon class. Akhilesh. ये सब तबीयत अभी खराब चल रहा, इसी कारण नहीं अटेंड कर पा रहा है। तो ये सुबह में तक तबीयत ठीक, दोपहर में तबीयत खराब। ये सर पूरा कल दिन भर तबीयत खराब रहा था, परसों भी रात, एक कारण दिन में अटेंड नहीं कर पाए। रिकॉर्डिंग देखी आपने अखिलेश सोते समय? ये सर तो कल कुछ बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता दिया मैंने, तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे उससे। तो as I was telling the story, because of these events today, my mom was pretty annoyed that we had chicken the night before we are going to have puja. My mom believes that if we are having puja today, then one should not have any non-veg, one should not eat any non-veg the day before. So she was annoyed, but what we could do, we couldn't waste the food. But my wife refused to eat because she didn't want to make my mom upset. So it was just the three of us, me, my daughter, and my wife's nephew, Ankush, the boy. And there were 4 big chicken breasts, I think, tandoori. We had it very late at night. Obviously, we didn't sleep very well. That's why I'm late, starting the class late as well. If only we knew, that he was going to bring these things, we would have not had dinner. Or we had known, if we had known, that would be the right structure. If we had known, we wouldn't have eaten our dinner. We would have enjoyed the chicken better. Yeah, of course. And he didn't tell me the reason why he did it. I mean, I thought that people normally do such a thing when there is a special occasion, right? Yeah. I asked him, what's the special occasion? Why did you bring the chicken? He said, nothing, just like that. I said, wow, that's so strange. I'm still very confused. And that was a lot of chicken. 4 big chicken breasts. 5, 6 people would have eaten, at least 4 people could have eaten very well. 1 breast was enough for 1 person. Will others join, or they will be lazy because I am late? Ruksari is here online. She will join maybe. So where are you? I can't see you. I'm sorry, I don't have my camera right now, so can't turn my camera on. It's not actually here. Somebody borrowed the camera. Maybe somebody took the camera somewhere. Oh. Hello, Ruksar. Hello, sir. Good morning. Good morning. So, I think we finished
the audio yesterday, did we? The audio. And what was the homework? There was homework in the main Main book book. Yes, sir. and practice book as well. Why are my recent files gone all the time? Why does that happen? In my PDF, Adobe PDF, my recent files are always gone, disappear. Why? It's a hassle. It's so easy to go to the recent and just open the file that I usually, use here to teach you guys. Now I'll have to go to the folder, open the files one by one again. Huh, so much of a hassle. It's 9. I am not feeling very well because I had a meal very late and I didn't sleep very well, unfortunately. So inside my stomach, I have this feeling everything is going round and round. You know that feeling when you have your meal very late and don't get proper sleep? Perhaps young people don't know this. Because when I was young, I didn't feel this way. Only after staying up for 2 nights, maybe. One night was nothing. Young people can stay up, can skip sleeping, without experiencing any weirdness, any strange tiredness, or anything. But after you reach 40, rest becomes very, very important. Without resting yourself properly, you will not be able to get the best of you. Okay, so I think I should start with the main book, everyone. Page number 98. Is the recording on? Yes. Page number 98. So here you go. Relative pronouns we have learned, and I think Sanjeev made the best use of this lesson. He understood that relative pronouns can be of 2 kinds. One that defines something and the other that give you extra information. And the difference is in the punctuation, comma. When the relative pronoun gives you extra information, there is a comma before them. Relative clause. A relative clause is a clause that starts with the relative pronoun. Okay. Now, we are looking at the text, my capital city. You see, you were supposed to complete this text. Shall I check this or the practice book homework? Everybody has done my capital city, or shall I check it tomorrow? No, sir, I don't. Nikhilva, you were absent yesterday. Yes, sir. You don't say anything. Sorry, sir. You're being lazy. So yesterday I woke up very late, around 6:40. So that's why I didn't join. You could have joined 6:40. Still, we had around 50 minutes of class, right? Almost an hour. It was silly of you not to join late. London Okay, sir. has a population of about 9 million people. I believe that when you learn the language naturally, then a lot of things will slip in your subconscious mind without
creating any confusion in your mind. And when you learn the language not in a natural way, then there will be too many doubts, too many questions, too many confusions in your mind. At every moment, you will feel, why this way? Why not that way? How is this possible? Learn naturally. So when I said London has a population of about 9 million people, whenever I say this sentence in any classes, some students simply listen and learn and they say, okay. And whenever I ask them to write a text, similar text, they write a similar sentence. Bihar Sharif has a population of about, for them, learning is copying, which is good. And then there is a special category of students, those who consider themselves good students, hardworking students, actually more hardworking than others. They have a high opinion of themselves and they struggle more. They will read this and then they say, a population, sir? This kind of question. Other people, like I said, those who are learning naturally, they will simply let it slip. Okay, London has a population. They will acknowledge it subconsciously. London has a population of about 9 million people. And they will make a similar sentence. Bihar state has a population of about 11 crore people. And when you do this, you follow all the grammar rules because you copied the sentence the right way. So this group of students learns fast, more naturally. They make less mistakes, eventually feel satisfied with their improvement. And the other group that I talked about, those who have a high opinion of themselves, they believe that they dedicate more time, more interest, more passion, and still they feel more confused because they learn unnaturally. They have learned too many rules without developing any sense for the language. And that's why, as long as you're teaching them rules, they sit there quietly, no problems. The real problem begins when you put English in front of them. Because when they look at sentences like this, a population, ek jansankhya, this is how they think. They think we are saying ek jansankhya. We are not saying ek jansankhya. We are saying London ki jansankhya. Understand? I am trying to spell out the challenges, how these things trouble some people. Some people, those who are not natural learners, because they have always learned in a very unnatural way. And that's why they have made very little improvement despite spending so much time, so many resources, and still know very little English. And they believe, oh, spoken English is impossible kind of thing. And they say, ek jansankhya kaise ho sakta hai? Kisne kaha ek jansankhya likha hai? किसने कहा कि एक जनसंख्या लिखा है? यहाँ एक जनसंख्या नहीं लिखा है सर, ए पॉपुलेशन लिखा। अरे यार, ए पॉपुलेशन को एक जनसंख्या तुम्हारा दिमाग कह रहा है क्योंकि तुमने अननेचुरल तरीके से सीखा है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ए पॉपुलेशन लिखा है तो उसकी हिंदी क्या हो? एक जनसंख्या। यहाँ लिखा है लंदन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 9 मिलियन पीपल, तो लिखा है लंदन की जनसंख्या 9 मिलियन है, बस यही लिखा है। आई बात सुनने? और इसी तरह से बिहार शरीफ की जनसंख्या 4 लाख है, तो बोलेंगे बिहार शरीफ हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख पीपल। तो जब आप सही हिंदी कर रहे हैं तो सही इंग्लिश भी कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप अब तक अननेचुरली सीखे हैं। आप मुझे कहिए कि मैंने अभी जो इमेजिनेशन यूज करते हुए ये एक कैटेगरी दिखाई है, क्या ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जो एक पॉपुलेशन देख के और एक जनसंख्या सोचे अपने दिमाग में? ऐसे लोग नहीं है? कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, मैंने पूछा, मतलब ऐसे लोग हैं, है ना? उनकी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कभी इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे समझने की, अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं की कि जो हम बोलते हैं वही कुछ और लोग बोलते हैं। उनके अंदाज को सीखना होगा, उनके तरीके को सीखना होगा।
बात तो एक ही बोलते हैं सब लोग दुनिया में, लेकिन किस तरीके से बोलते हैं, नई भाषा में कैसे बोला जाता है, वो सीखना ही नई भाषा सीखना कहलाता है। नई भाषा को अपने भाषा के हिसाब से एडजस्ट कराना लैंग्वेज लर्निंग नहीं है। Sorry. London has a population of about 9 million people. In this category, there are two types of students. These unnatural learners. They don't have much imagination, one, and two, their teachers, because of the way they learned, they have stopped thinking, or maybe they never started thinking the right way. London has a population, एक जनसंख्या. I have a daughter, मेरी एक बेटी है. I have a, हम मेरी तो मैंने बोला ही नहीं, भाई तो मैंने बोला ही नहीं है, लोगों को समझना पड़ता है. I have taught so many students who translate, और अभी भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं YouTube चैनल देखने वाले लोग, ठीक है. I have a daughter मतलब मेरे पास एक बेटी है, क्योंकि I have मतलब मेरे पास से बचपन में पढ़ लिया ना. इमेजिनेशन काम नहीं कर रहा है कि भाई बच्चों के बारे में आदमी ऐसे नहीं बोलता हिंदी में. कोई आदमी बोलता है कि मेरे पास एक बेटा है, मेरे पास एक बेटी है. शादी विवाह के मामले में कभी कभी कहीं पे कोई कॉन्टेक्स्ट में बोल देता है कि मेरी एक लड़की है, ठीक है, आपका एक लड़का है, मेरी एक लड़की है, दोनों का शादी करवा देते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज पीपल नॉर्मली से मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, ऐसे बात करते हैं, राइट. सो आई हैव अ डॉटर, मेरे पास एक बेटी नहीं होगा. ये वैसे लोग हैं जो एक चीज को रट जाते हैं और बाकी अपना इमेजिनेशन यूज नहीं करेंगे, बस ऐसे ही होना चाहिए, कहीं आसान है ऐसे करना. तो लेजी भी होते हैं लोग, बिकॉज इट टेक्स एनर्जी एफर्ट फ्रॉम यू टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन. इसे कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस, इफ यू आर अ गुड लर्नर, दैट इन इंग्लिश पॉपुलेशन इज ए काउंटेबल नाउन. Otherwise, A was not possible before it. That's all we can say. In English, population is a countable noun too. Yes, population is an uncountable noun, but population is a countable noun as well. It is one of those nouns which is both countable and uncountable. ये सबसे खराब कैटेगरी है आप लर्नर्स के लिए. आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही कैटेगरी करेगा. पॉपुलेशन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे अनकाउंटेबल है, ठीक है. एक जगह की पॉपुलेशन को गिन सकते हो, वो काउंटेबल है. दूसरे जगह की जनसंख्या गिन सकते हो, वो काउंटेबल है. लेकिन जनसंख्या एक अपने आप में एक आइडिया है, एक आइडिया के तौर पे अनकाउंटेबल भी हो सकता है. The population of the world is growing. Okay, the population of the world is growing. Okay. So ये टॉपिक ऐसा है जो अभी एलिमेंट्री लेवल पे टच नहीं करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा. आई विल नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन इतना याद रखना कि कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे एक्सपीरियंस वगैरह वर्ड्स जो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उनके एक इंस्टेंस की बात करें तो वो काउंटेबल हो जाती हैं. कोई खास एक्सपीरियंस की बात करें वो हो गया काउंटेबल, वो एक एक्सपीरियंस, ठीक है. When I went to Habib's show, haircutting salon, I didn't have a good experience. I didn't have a good experience. Okay. तो ये धीरे धीरे ऐसे हिंदी में हॉल में बैठ के वो उतना हाई लेवल का ग्रामर नहीं फॉलो कर पाएंगे प्रैक्टिकली. जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, that some nouns are both countable and uncountable. The meaning will remain the same. The meaning doesn't change. Experience means अनुभव. Countable may be अनुभव, uncountable may be अनुभव. तो कैसा अनुभव countable, कैसा अनुभव uncountable, that is something that you guys will appreciate when you reach another level, higher level of understanding. Then you will understand this.
all the grammar rules, all the concepts of English cannot be taught without taking into account the level of the students. It's like teaching calculus to a 5-year-old child. If there can be higher level of maths, which should be taught to those learners of maths who have reached a certain level already. Similarly, when it comes to teaching English, the language, certain concepts are beyond your understanding unless you reach a certain level. And that's why step-by-step learning is the best thing, where we have divided our classes into different levels. At the elementary level, if the students work with us the way we want them to, if they are not lazy, if they are not crazy in their minds, if they are not rigid, rigid is an important word I have to use here, because I've experienced that because of 10 years of schooling and hearing unproductive ideas from teachers, their minds become rigid about those ideas, and they believe that this is how people learn, because all their teachers, all their school life have been saying those things. Even though they have not been able to get results from them, they still believe that perhaps there is nothing wrong with the idea. I haven't worked hard enough, they believe. And when I suggest something unconventional, they kind of doubt that. Don't follow it. On Saturday in the evening at about 6 o'clock, most probably, I am going to invite a student of English from Uzbekistan, a woman in her early 20s or mid 20s, I think. And she was not able to speak English when she was a child, just like you guys, because she's from Uzbekistan. English is just a foreign language, you know. But she learned English. She went to classes. She worked hard, and she has some interesting ideas to share. I've already talked to her. So I'm going to talk to her, interview her. My students will talk to her as well. I will make it live on my YouTube channel. Did I talk about it yesterday? Yes. I said yes. So you guys can be present, okay? And talk to her, listen to her ideas. The only thing I'm saying is, if you guys do not realize that without learning step by step, because you're adults, you're not a kid, you know, kids can learn naturally. That's a different thing. They don't need the methods that we employ, you know, when we teach adults. Teaching adults and teaching children are different, actually. You know, it's different for the teacher, and we need to use different methods, okay, when we are teaching young kids and when we are teaching grown-up people like you guys. You need to appreciate this. And I always try and convince you with examples that, look, this will happen. A population, some people will definitely translate it with ek jansankhya, or they will say ek error hai yahan pe. Give this sentence to those who are preparing for the exams. And they will say, a population, ek jansankhya, error hai, hatao, ye hatao. I think students should be asked to solve questions about error if they're learning. Those questions should be related to what they have been taught. It should not be beyond what they have been taught in class. Otherwise, they will resort to guesswork. They will have no other choice but do guesswork. When you guys do the find the error thing for competition, unfortunately, you have not been trained enough to solve them, those questions, and they ask you to do it. As a result, what happens, you guys have just one option: make some guesswork, okay, and then see what happens. Now, do some guesswork, I should say. I don't know why suddenly so many mistakes. Okay, anyways, let's carry on. London has a population of about 9 million people. It lies on the river Thames, comma.
nearly 2000 years ago. What goes in this blank space? Where the Romans landed. Where the Romans landed, the river Thames is a place. Okay, here it has been used as a place. Place. Hotel, rivers, these things can be used as things and they can be used as places both. Say, if I say, मैं ताज होटल में रुका, जो कि दुनिया का सबसे बढ़िया होटल में से एक है, तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो थिंग वाला होगा, क्योंकि मैंने कहा जो कि मतलब होटल। ठीक, मैं ताज होटल में रुका जहां प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी रुक चुके हैं पास्ट में। अब ये प्लेस हो गया। सी द डिफरेंस। मैंने कहा जो दुनिया का सबसे अच्छे होटल में से एक है, तो व्हेन आई सेड जो, इट मींस आई वाज रेफरिंग टू इट एज ए थिंग, एंड व्हेन आई सेड जहां, then I was referring to it as a place. So I stayed in the Hotel Taj, comma, which is one of the best hotels in the world. I will use the pronoun which here. I stayed in the Hotel Taj, comma, where prime ministers and presidents have also stayed in the past. Okay, so point is, you have to be smart to understand. There is no formula. You have to understand what you're saying. So that's why river Thames can be considered as a thing, which, but here, where the Romans landed nearly 2000 years ago. So river Thames is being used as a place here. Okay. From about 1800 until the Second World War, from about 1800 until the Second World War, London was the biggest city in the world. London was the biggest city in the world, but now it's Shanghai. Now it is Shanghai. देखो प्रॉब्लम क्या है, कोई नया वर्ड नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो somehow नहीं निकाल पाएंगे इसकी मीनिंग, और वो क्या उनकी बीमारी है, क्या उनकी प्रॉब्लम है। तो ये सीधा बात है कि वो दिमाग अप्लाई करने की आदत नहीं रखते हैं, बस इतनी सी बात है। और ऐसे स्टूडेंट्स को इस बात को रियलाइज करना होगा कि उनके टीचर जब ये बात हाईलाइट कर रहे हैं तो उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, वो बता रहे हैं कि अरे यार मेरे को कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ सोचते रहना दिमाग में जो बात बताई जा रही है। रुखसार, आप हो क्लास में? Yes, I am here. Please translate this sentence. From about 1800 until the Second World War, London was the biggest city in the world, but now it's Shanghai. From about 1800 until World War, London was the biggest city in the world. लंदन एक बड़ा सिटी है वर्ल्ड का, बट नॉट इट्स है, लेकिन लंदन एक बिगेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट सिटी मतलब? बिगेस्ट सिटी बड़ा, और बिग सिटी? बिग सिटी मीन्स भी बड़ा। तो कोई फर्क? बस
EST लगा हुआ सर। उससे मीनिंग पे कोई फर्क? नो, कोई फर्क नहीं। आप लगातार क्लास करी थी जब मैं पढ़ा रहा था? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब पढ़ा रहा था इसी क्लास में आई आज से कोई थिंक 10 दिन पहले? नहीं नो। थी। नो। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेटा रुखसार, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, खाली बड़ा नहीं, बिग मतलब बड़ा। द बिगेस्ट सबसे बड़ा। हाँ, इट्स द सुपरलेटिव। ओके, बताओ, अब बताओ। फ्रॉम अबाउट 1800 until the Second World War, London was the biggest city in the world. What is the meaning? London was the biggest city in the world. उसके पहले from about 1800 until the Second World War मतलब World War. ये 1800 रुपयों की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? 18 से until World War, जब तक, from about 1800 until World War. क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है आपके दिमाग के लिए, या कुछ भी मतलब नहीं निकाल पा रही हैं आप? From about 18 until World War. अखिलेश कुमार, कैन यू प्लीज translate this part? From about 1800 until the Second World War. लगभग 1800 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। नहीं, 1800 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। फ्रॉम अबाउट 1800। देखो, मुझे अभी मिला है अखिलेश, ऐसे ही पत्थर के तौर पर। देखा तुम लोगों ने ट्रांसलेशन? 1 साल 6 महीने 8 महीने मेरे साथ रहेगा, ठीक है, फिर ये लाइन को वो सही समझेगा। और ऐसा नहीं कि ये बिना इंग्लिश पढ़े हुए इतना बड़ा हुआ, पढ़ा है, बस सही असर नहीं हुआ। इस बार असर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बना रहे। फ्रॉम अबाउट 1800, 1800 से, until the Second World War, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, 1945, 1800 से 1945 तक, लंदन वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्या लग रहा है कि आप बच्चों के साथ बैठे, अगर मैंने ये हिंदी बताई तो आपको ऐसा लग रहा होगा? आपको लग रहा है तो ऑब्वियस था, ये तो समझ जा गए थे हम लोग, राइट? ऐसा फील हुआ होगा कि इसकी हिंदी करने की क्या जरूरत है, तो समझ गए हैं, राइट? बट आपके दो क्लासमेट्स रुखसार और अखिलेश को ये नहीं समझ में आया था, जिसमें अखिलेश को मैं माफ कर दूंगा अभी, बिकॉज मैं फिर बोलूंगा ही हैजंट स्पेंट मच टाइम। अखिलेश, यू शुड बी हियर इन द फिजिकल क्लास, अखिलेश। ओके अखिलेश, ट्राई टू बी हियर इन द फिजिकल क्लास। रुखसार को मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्यों? वो काफी समय बिता चुकी है वहां से रूम ये खाली कर सेंस दिया। डेवलप करने के लिए कि क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन नहीं हुआ है ऐसा। उसकी वजह है, वजह बता दूं? मतलब क्षमताएं तो अपनी अपनी है ही, लिमिटेड अपनी जगह पे, बट जब क्लास में पढ़ाई की बात हो रही होती है तो वो क्या मैं बताने की कोशिश कर, उस पर ध्यान नहीं देती हैं, वो ध्यान नहीं देती। शी डजंट पे अटेंशन कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस चीज पे मेरा फोकस है, वो ध्यान नहीं देती है। शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल। एंड I will agree that she's spending a lot of time, but she has not been working hard, especially in this class. Because, and the 7:30 batch, when she first joined, she was like Akhilesh. Okay, she couldn't understand anything. I used to have a lot of patience with her. मैं कहता था कोई नहीं, बने रहो रुखसार, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कैसे हो जाएगा? काम करने से धीरे धीरे, या ऐसे ही बैठे रहने से? काम क्या करना होगा? ईंटें लगानी होगी, सीमेंट लगाना होगा। अरे यार, ध्यान लगाओ, स्टडी करना समझने की होगा। कोशिश करो बोला जा रहा है। रिवाइज करो अपने लेसन को, दोबारा से उन चीजों को आने दो दिमाग में जो क्लास में टीचर ने एक्सप्लेन किया है। दैट्स कॉल्ड
हो जाएगा धीरे धीरे। आप कुछ नहीं करोगे, क्लास में आया हल्का फुल्का सुने, ध्यान भी नहीं दिए, फिर अगले दिन क्लास में आया हल्का फुल्का ध्यान दिए, आपका कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होना कभी। डेडिकेट आपको भी करना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा ना। मेरा खास क्या है, मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डालूंगा कि अभी जवाब दो, अभी कभी बताओ, ये सब मैं नहीं करूँ, मुझे पता है समय लगता है। फ्रॉम अबाउट 1800, फ्रॉम 1947 1947 से, इन 1947 1947 में अलग अलग है फ्रेजेस, राइट, टू 1947 या अंटिल 1947 1947 तक, फ्रॉम अबाउट 1800 until the Second World War, London was the biggest city in the world, but now it's Shanghai. But now it's Shanghai means now Shanghai is the biggest city in the world. It's a similar sentence. Until 2006 or 7, when was Burj Khalifa? When did it open for Burj Khalifa? In 2006 or 7. So before that, Taipei 101 was the tallest building in the world. But now it is Burj Khalifa. But in the future, it is going to be another building. It's Shanghai, which has 25 million. No, it's not. It's under construction. They have finished the construction. I think it is Saudi Arabia, not in Dubai. You're mistaken about it. The tallest building is not in Saudi, UAE. Okay. Let's find out. Taller building than Burj Khalifa. Jeddah Tower. Yeah, you're right. Jeddah Tower is also. No. Okay, wait. Where is Jeddah Tower building? Where is Jeddah Tower building? अरे इतना जल्दी कैसे खत्म कर रहे हो यार, सुन ले बढ़िया से। Where is Jeddah Tower building? Saudi Arabia. You put me in doubt. Okay. London is now it is Shanghai, which has 25 million people. London is famous for many things. London is famous for many things. Tourists come from all over the world to visit its historic buildings. Tourists come from all over the world to visit its historic buildings. You know what, Rukhsar? I want to just say this to all of you guys here, that I believe that nobody here in my class is learning under pressure from somebody else. I believe that people choose to come here, pay such a huge amount of money to study with me. So what's the point of pressurizing someone? It sounds a little unreasonable to me. Even if students were here for free, even if I were at a school, I would not pressurize my students as much. It goes against my belief system that anything can be achieved from someone forcefully, like one can be made to do something good forcefully. I don't believe that is possible. There is this word neighbor.
I taught the word neighbor, the spelling, some 3-4 times maybe in my classes. A certain boy in that class was always there when I highlighted it, and I knew it. He needed to learn it. Yesterday, he used the word the wrong way, the spelling again. Okay, why would he do that? Because some students somehow are just not working hard enough. They want thrill, they want excitement. Sometimes you have to accept there is no excitement, no thrill. There are so many things that you need to do. Is there thrill and excitement in waking up every day? Is there thrill and excitement in brushing your teeth? No, but you do these things. These things are important. If you don't brush your teeth, soon you will see the problems, right? Just don't do it for 1 month and see the problems. So you realize it and you do it as a ritual, as a habit, right? And some smart people do it properly. Some people may not be so smart. So similarly, when you come to the lessons, you have to dedicate yourself. If the teacher teaches something, you have to go and revise that. If you didn't understand it 100%, why not revise? Just tell me. It means you're saying it's okay, I don't understand, no problems. If I say that take it easy, it means I don't want you to stress out. Because it is also true, some students stress out a lot. So relax, revise, and whatever you understand, fine. As long as you're revising, I'm pretty sure you will be fine. Unnecessary pressure they take. So I save them from this unnecessary stress, saying that relax, but they over-relax when I ask them to relax. This is exactly, otherwise I couldn't understand why that guy would not remember the meaning of the word neighbor, the spelling of the word neighbor. Okay. London is famous for many things. Tourists come from all over the world to visit its historic buildings, such as Buckingham Palace. 3. Tourists come from all over the world. Now, if we can't repeat this sentence, if we can't repeat these words in this way, and if we don't feel comfortable, because this is present simple, tourists come. So it should not challenge us grammatically. Now, the words are also very familiar. Tourists come from all over the world. अब इमेजिनेशन तो रखना होगा कि दुनिया के हर एक हिस्से से आते हैं. टूरिस्ट कम फ्रॉम, अब वहां हिस्सा हर ये नहीं लिखा तो बोलेंगे नहीं. ऑल ओवर लिखा है तो क्या हम पूरा ऊपर बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे. टूरिस्ट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट इट्स हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. इट्स हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ये वाला हिस्सा है जिस पे ध्यान देना चाहिए. इट्स हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. इट्स मीन्स London's, not London. London's. Yes. London's. यहाँ apostrophe s नहीं, it's में नहीं, लेकिन London में apostrophe s. London's. London का. It's historic buildings. And one of those historic buildings is Buckingham Palace, such as Buckingham Palace. Number 3. Where the Queen lives. The Queen lives. And the Houses of Parliament. Which is the biggest? ना, अगर लिखे which is the biggest तो आगे कैसे बढ़ेंगे? And here the famous clock. वो तो पहले ही नंबर में आ गया था ना. What did you put in number 1? चलो करो फिर से. I will not check it. मुझे ये पसंद नहीं कि ऐसे स्टूडेंट्स उटपटांग चीजें ऐड करें. अच्छा तू बता भाई. In the houses of parliament where the Romans landed, and here the famous clock. That's what I'm saying कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए. आपका दिमाग दूसरे जगह, खाली जगह भी है, वहां पर भी तो कुछ जाएगा, तो एलिमिनेशन भी तो होना चाहिए. ऐसी चीजों में आप जब गलतियां करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताते हैं. आपकी इंग्लिश खराब नहीं है, आपका दिमाग काम कम करता है. मेरे ज्यादा खराब है आपकी इंग्लिश, मेरी इटालियन ज्यादा खराब है. मैं ऐसी गलतियां नहीं करता, लगभग नहीं करता. मुझे भी दिया जाता है फिट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कहाँ जाएगा.
तो मैं पूछता हूं कौन सा सेंस बनाता है? आपकी इंग्लिश ठीक है फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग का इमेजिनेशन कम है। क्या हो बोल रहा है, बोला जा रहा है, क्या बात बन रही है? मैं चेक नहीं करने वाला, सॉरी, आई वोंट टेक दिस मिस्टेक्स। ये हम मिस्टेक करने के लिए नहीं होता ये होमवर्क। ये सब होमवर्क पहले बता दूं, ये होमवर्क A to H सही जगह ही जाएगा सारे स्टूडेंट्स का। सीखना है सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय। आपको गलतफहमी है कि ये सीखना है कि कौन कहाँ जाएगा, ये है ही नहीं टास्क देखा जाए तो। ये ग्रांटेड है कि 100 में 99-98 लोग सही करेंगे, इतना आसान टास्क रहता है ये। लेकिन इस टास्क के थ्रू क्या सीखना होता है पहले ये सोचो। इस टास्क के थ्रू आप इतने सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, दिमाग में इसकी मीनिंग जा रही है, तो आप इंग्लिश सीख रहे हो। ये मत मुझे समझाओ कि A to H में 6 सही और 7 सही हो गया तो आप बड़ा तीर मार लिए। ये 8 के 8 सही जगह ही जाना चाहिए। इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है आप जैसे लोगों के लिए, ये 8 सही जगह डाल देने में। जो नहीं डाल पा रहे वो बच्चे हैं दिमागी रूप से, सिंपल। टास्क ये नहीं है कि 8 आप सही करते हो कि नहीं, आपका दिमाग नहीं समझता चीजों को। ये टास्क है ही नहीं कि आपने 8 सही जगह रखा है। टास्क ये है कि क्या आप 8 को सही जगह रखते समय आपने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा, अप्रिशिएट किया, कुछ नया सीखा, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दिया, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखा कि नहीं। ये है टास्क। थोड़ा और इंप्रूव किया कि नहीं, प्रैक्टिस मिली कि नहीं। आप लोग उलझे रहते हो कि 8 सही जगह चला जाए, तो इसका मतलब आप लोग दिमाग से बच्चे हैं, सिंपल सी बात। अडल्ट है ही नहीं आप दिमाग से। अगर कोई एक गलत जगह चला जाएगा किसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करके, तो वो जहां जाना चाहिए था वहां क्या जाएगा? यानी वहां तो बड़ी कंफ्यूजन होनी चाहिए ना आपको। मान लिया कोई थोड़ा हद तक आपको कन्विंस कर लिया, एक गलत एक्सप्रेशन आपने लगा दिया, नंबर D को 4 में लगा दिया, नहीं जाना चाहिए वहां, लेकिन आप कन्विंस हो गए किसी। तो जहां D को जाना चाहिए था वहां क्या जा रहा है? वहां आपको कैसे कोई और कंफ्यूजन में दे रहा है? इसका मतलब आपका दिमाग, इंग्लिश नहीं खराब है, फिर से बताता हूं, आप सबकी इंग्लिश वोकैबुलरी ग्रामर इतना है कि इस तरह के एक्सरसाइज है जो मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, इसमें इंग्लिश स्किल्स नहीं यूज हो रहे हैं। फिर से बता देता हूं, इसमें कोई आपके इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है। आप दिमाग से सही चीजें कर पा रहे कि नहीं, फैसला आपकी लैंग्वेज सेंस है कि नहीं। कुछ का कुछ एक, मैं कैसे बताऊं, ऐसे भी सेंटेंसेस लोग मैच करते हैं, अजीब अजीब चीज मैच कर देते हैं। मैं कैसे उनको समझाऊंगा? किसी ने मैच कर दिया कहीं पे, आई गेट अप लेट बिकॉज माई फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन हो सकता है इसका? उसका दिमाग कैसे मान लेता है कि पापा के फैक्ट्री में काम करने से मैं देर से उठता हूँ, इस बात जस्टिफाई हो जाएगी वहां? और दिक्कत यह है कि वहां एक बेहतर ऑप्शन है, आई गेट अप लेट लिखा हुआ है कहीं ऑप्शन वहां पे, आई गो टू बेड लेट टाइप से सेंटेंस, फिर भी वो छोड़ के कोई इसको जोड़ रहा है, तो उसका दिमाग बच्चे वाला है। और क्या कहेंगे? एक अडल्ट इस बात को समझेगा ना कि इस दोनों बात में कोई कनेक्शन नहीं है। उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई लाइन जोड़ के बैठा हुआ है। तो आप लोग अपने मेच्योरिटी पे काम करें कि जो चीज आप लिख रहे हो वो सेंस बना रहा है कि नहीं। आई विल नॉट चेक इट नाउ, आई एम सॉरी, आई डोंट एक्सपेक्ट मिस्टेक्स। मैं यहाँ गलतियां उम्मीद करता ही नहीं, कभी नहीं करते। स्टूडेंट्स 100 में 90, 98, 95 नहीं करते गलतियां। आप वो 5-10 में क्यों जा रहे हो जबरदस्ती? उलट पुलट चीज मैच करके बैठे हो। इसका मतलब ये हो रहा है या तो आपने मन से नहीं किया, टाइम नहीं दिया है, या तो आप दिमागी रूप से बच्चे हैं। दो में से एक बात। आप भले ही शरीर से बड़े हैं बट दिमाग से बच्चे हैं। So please do your best. Let's go to the practice book. I'm not checking it. No, no way. Vocabulary, page number 60. Town and country. ये चैलेंजिंग होता लैंग्वेज की वजह से। अगर वहां ऐसे शब्द डाले होते मैंने, ठीक है, टेक्स्ट में, जो आप फेमिलियर नहीं है, जिसकी मीनिंग से आप फेमिलियर नहीं है, तो मैं मानता कि लैंग्वेज परेशान कर रही है आपको। वहां कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, ना ग्रामर के तौर पे, ना ही वोकैबुलरी के तौर पे।
There is no grammar that you do not follow, you don't understand, and there is no vocabulary that you do not know. फिर भी ये गलती हो रही है. या तो there was no focus, no attention enough, and another option is, like I said, you are mentally a child. Find these things in the picture. अभी देखो कुछ गलतियां नहीं होंगी. That's why it gets boring ना. यहाँ पर ये अभी कैसा फील हो रहा होगा मुझे कि वो ये मैच कराने में कैसी गलती कर दी. कौन फ्रेज कहाँ जाएगा, किससे सेंस बन रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है. एडल्ट हो तुम, तुम्हें लिखना नहीं खुद से कि क्या लिखना है, वो लिखा हुआ है, तुम्हें रखना है वहां उठा के. The picture, some pictures are not very clear. By the way, picture number 2 is the railway station. Picture number 2 is the railway station, because if you notice, behind this building number 2, there is a track, railway track, right? So that's why picture number 2 is the railway station. Picture number 13 at the top of the picture is the crossroads. Roundabout, not crossroads. Sorry, my bad. Roundabout. Come again. Picture number 1 is the statue, but we are just looking at the picture, and then come down a bit. We are coming down. Then we see number 9. Number 9 is the hill. We are going up the hill, the road, I don't know, the street, the hill. What are the words? Hill. Go with 9 is the hill. Can you see the road has a slant? It's going upwards. Number 9, right? So that's the road, and the structures are on a hill. All these things are on a hill. These buildings are on a hill. This road is on a hill. Okay. Number 8 is a shopping center. And number 6 is a car park. Number 4, you see traffic lights here. And number 3 is a square. And then we come to the corner here. Number 5, we have the petrol station. And number 12 is the market where we buy the local produce. And number 10 is a block of flats where people live, block of offices where people work. So big buildings are called blocks in English. Big buildings are called blocks. Now they can be blocks of offices, they can be blocks of flats or apartments. Then we have 11, we see lots of trees. When there are a lot of trees in an area, we call it a wood or woods. Yeah, no, people will say wood is an uncountable noun, it means lakdi. Yes, wood is an uncountable noun, it means lakdi. Lakdi cannot be counted. But woods is an area of a lot of trees. And there you can say a wood and woods. Okay. Now, number 7, English is not a very scientific language. So there are a lot of things which are not logically explainable. Okay. But that's how it is. You have to accept the idea. That's it. Number 7 is the bridge. And 14 is the crossroads or zebra crossing. No, sorry, again, I don't know why I'm saying crossroads, pedestrian crossing. Number 14 is, by the way, the word that I've been using, crossroads, is choraha in English. Any crossroads is when two roads cross each other and can carry on. Two roads meet and carry on. Like this road is going this way and another road crosses this. So the where they meet is called the crossroads. Choraha. Okay. It has an idiomatic meaning in English as well. I'm standing at a crossroads in my life. I'm standing at a crossroads in my life. In Hindi we say the same. Zindagi mein main chorahe pe khada hu. Okay. Some people say dorahe pe khada hu. Okay. That's okay. But in English we say crossroads. Okay. Number 13. I didn't share the audio file with you. I will share. And number 14, prepositions. The school is on the left.
That is what we say, on the left. Learn the whole expression, on the left. In Hindi भी से स्कूल बाएं साइड में है. साइड यूज करे चाहे नहीं करे, बोलते हैं हिंदी में ऐसे. बिहारी तो ऐसे ही बोलते हैं, स्कूल बाएं साइड में. The school is on the left. 2. Turn right at the traffic lights. At the crossroads. So at the traffic lights. There is a statue in the main square. There are 3 people at the bus at stop. the bus stop. और ये सारे एग्जाम्पल से एक सेंस डेवलप होता है. कोई चीज को किसी नाम से जान रहे, वहां बस स्टॉप है तो बोल रहे उस एरिया को एट द बस स्टॉप. ऐसे ही हो रहा है ना. ट्रैफिक लाइट्स है, उस एरिया को बोल रहे एट द ट्रैफिक लाइट्स. अब वो एग्जैक्टली कहां पे है नहीं बोल सकते, उस एरिया पे बोल रहे एट द. ओके. द बस स्टॉप इज outside the chemist. Outside. The river is At the bottom of the hill. And 7. The wood is at the top of the hill. No, at the top of the hill. Sorry. At the top of the hill. 8. The Millbank Hotel is outside. No, sir. The Millbank. Number 8. Number 8. Nikhil, number 8. So in the right. तुम बोलो जी. अच्छा, नंबर 1 में ऑन द लेफ्ट पढ़ सकते हैं, तो ऑन द राइट बोलने में कितना देर लगना चाहिए हमको? निखिल भी उन्हीं में से है, पैदल टाइप से. ऑन द लेफ्ट पढ़ेगा नंबर 1 में, लेकिन उसके बाद इन द राइट बोलेगा. क्यों भाई? ऑन द लेफ्ट पढ़े तो उसमें दिमाग में नहीं आता कि अच्छा ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट दोनों फ्रेज बन गया. जैसे बोलते हैं बाय साइड, वैसे बोलते हैं दाएं साइड. ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट. बताओ नहीं एक्सप्लेनेशन तुम्हारा इसको अप्रिशिएट नहीं करने का, बता सकते हो तुम कि ऑन द लेफ्ट पढ़े तुम बट ऑन द राइट नहीं सीख पाए, क्या वजह है? निखिल. Yes, confused. ऑन द लेफ्ट पढ़े ऑन द राइट क्यों नहीं सोच पाए, ये पूछ रहा हूं. ये वर्ड को गाली के तौर पे मत यूज करो अपने आप को. कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज. सारे लोग बस एक वर्ड बोलना जानते हैं कंफ्यूज. उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि कंफ्यूजन किस वजह से पैदा हुआ, बस बोल देंगे कंफ्यूज है. ये क्या होता है यार? बच के भागना कहते हैं इसको. कंफ्यूज बोल दो, सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कंफ्यूज हम है, अब आप सॉल्व करो. अरे कंफ्यूजन पैदा कहां हुआ ये भी तो बताओगे. ऑन द लेफ्ट लिखा है 1 में, तो वहां पर ऑन द राइट क्यों नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? इसका जवाब दो. उसके लिए अलग से तुम्हें लेसन चाहिए. तो फिर सीखना क्या होता है? नंबर 6 में एट द टॉप है, तो नंबर 7 में नंबर 6 में एट द बॉटम है, तो नंबर 7 में क्या है? एट द टॉप है. At the top. दोनों भी ऑपोजिट एक जैसा है ना. एट द बॉटम, एट द टॉप. नंबर 9. At the end of the street, turn left. Number 10. The mayor's office is in the town hall. Inside the town hall. ये कोई मिस्टेक नहीं है, उसको छोड़ो, गोली मारो. Number 10. That's not a mistake. Now look at these pictures. Number 1. Number 2. Along the river. 3. 3. 3. Through the wood. 3 through. 3 through. 3 through. 3 through. Okay, through the wood. Number 3, through the wood. Very interesting sounds. 3 through. Number 4, up the hill. Number 5, down the hill. 6, over the bridge. 7,
पास द पेट्रोल स्टेशन। अब ये दिक्कत ये है कि अब आप में से कुछ लोग बस यहीं तक रुक जाओगे, इसको सेंटेंस में नहीं डाल पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे ही रोड हिज बाइक पास द पेट्रोल स्टेशन। द ट्रेन वेंट ओवर द ब्रिज 8 around the bend। Round the bend। तुम सब लोग अपने आप पे काम करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ एकदम सीधे शब्दों में तुम्हें, ठीक है, कि एक 50 किलो का लड़का जिसके हाथ में ज्यादा ताकत नहीं है, वो ये जिम में 20 किलो नहीं उठा रहा है तो दूसरे जिम में नहीं उठा लेगा। एक वो जिम में नहीं उठा रहा तो घर पे बोरा नहीं उठा लेगा 20 किलो का। दो, वो उसका वो जो ताकत नहीं, वो ताकत बनाएगा 20 किलो उसके लिए हल्का नहीं होने वाला कभी, वो ताकत बढ़ाएगा तो 20 किलो हल्का लगेगा उसको। 20 किलो वजन 20 किलो ही रहना है। तो इंग्लिश जो है, जैसे सामने चैलेंज है वो ऐसे ही रहना है। तुम्हारी क्षमताएं बढ़नी है, अपनी क्षमताएं बढ़ाने पे काम करो। कभी मत बोलना ये लेसन मुश्किल है, ये तुम नीचे पड़े जा रहे हो, उसको ऊपर कैसे लेके आ सकते हो, ये चीज पूछो अपने आप से, बस इतना ही। और कर सकते हो by just being more attentive, by giving more time. I will see you guys tomorrow and I don't want to see any mistakes there. आधे घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगता है, I don't care, but do that text, London text properly. We'll start a new unit tomorrow, hopefully. Bye bye everybody, take care.